हेलो दोस्तों, मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसे दोस्त, एक ऐसे अपने को पैनलिस्ट और एक ऐसे हस्ती, ऐसी शख्सियत कहा जाता हूं जिनको आज की तारीख में कोई तारुफ की मोहताज नहीं है। ये है, आप सब इनको जानते हैं कि भाई Wow. आपने इनको टीवी पे देखा हुआ है अक्सर, अपने ब्रिलियंट एनालिसिस के साथ, अपने ब्रिलियंट ओपिनियंस के साथ, जिनकी कदर, जिनकी इज्जत हर कोई करता है। अब बात Thank ऐसी है you. भैया दोस्तों, मजे की बात यह है, कल से एक लगातार आग पकड़ी हुई एक वीडियो ने एक बहुत वायरल हो रहा है। इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रहा है वो वीडियो, जहाँ पे याना मीर और आरजू काजमी और यूसुफ जाई साहब Pakat. एक Pakat एक Yusuf. वीडियो, हाँ, और एक वीडियो में बैठे हुए हैं और याना मीर ने क्या जबरदस्त धांसू एनालिसिस दी। खैर वो सब आपने देखा होगा। खैर वो सब उस पर हम चर्चा भी करेंगे और भी चर्चा करेंगे और कुछ दिलचस्प किस्से सुनाएंगे। अगर मैं बोलूंगा तो मैं बस बोलता जाऊंगा, ऐसे बात नहीं है। हम याना मीर का स्वागत करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। Thank you. और याना Thank you so शुक्रिया, much. Thank थैंक you. यू वेरी मच फॉर टेकिंग योर टाइम फर्स्ट, शुक्रिया बहुत बहुत। Thank you for having me on your show, Ali Saab. थैंक यू याना। याना, पहली बात तो भाई, आप वाकई मैं बता रहा हूँ इतनी खूबसूरत लगती हैं। आप पता नहीं क्या टेलीविजन पे आपको कोई एक्ट्रेस कहीं पे बॉलीवुड बॉलीवुड में होना चाहिए था आपको, वाकई में। इंशाल्लाह अगले जन्म में शायद. इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले तो हमको बताइए, कल के ये जो वायरल वीडियो हुआ है, थोड़ा बहुत इसके बारे में बताइए आप कि भाई दरअसल आग लगी हुई है, यहाँ पे प्रिंट ने भी कवर किया है, यहाँ पे मीडिया हाउस ने भी कवर किया है, और जितना वो कवर कर रहे हैं उतना और वो आग पकड़ रही है तेजी से। मगर एक चीज, हाँ एक चीज मेरे को क्लैरिफाई करनी है आपको दोस्तों। भाई मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा एक बात कि उसमें लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, लिख रहे हैं हियर इज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, थ्री पाकिस्तानी आई एम कॉन्वर्सेशन एंड हियर दिस वाज द टॉकिंग। भाई याना मीर हिंदुस्तानी है दोस्तों, शी इज अ वेरी प्राउड इंडियन एंड शी इज अ पेट्रियट, अ ट्रू पेट्रियट। याना मीर ने कहा था कि भाई इनके बस में हो तो ये जाके सरहदों पे, बॉर्डर पे वर्दी डाल के अगर इनको मिले तो वहां पे दुश्मन की छक्के छुड़ा देंगे। शी इज दैट, वो जज्बा है इनमें। यार फर्स्ट टेल अस अबाउट दिस वीडियो यार। So, Ali, I don't know why it came to me, that thought. It was just very instant, very spontaneous, very extempore. Just suddenly it just clicked to me that, ये जो है बार बार डिस्प्यूट डिस्प्यूट, और मैंने उन दोनों के साथ कई बार मैंने डिबेट भी किया है, एंड उनके चैनल्स पे भी आई हूँ, एंड हर बार वही कश्मीर वाला मुद्दा, हर बार यार, हर बार. एंड आई थॉट, व्हाई इज दिस नॉट चेंजिंग? एंड आई देन इट जस्ट स्ट्रक मी दैट जो वहां की लोग है ना, आम आवाम, उनका ही नजरिया ऐसा है. सो डू यू ब्लेम बिलावल भुट्टो फॉर टॉकिंग लाइक दैट, vilifying India, vilifying the Indian Prime Minister? No matter who the Indian Prime Minister is, vilification has been happening since Benazir Bhutto's times, or maybe since Zulfikar Bhutto's times. Vilification of India has been a trend over there, and I was like, why is this not stopping? Why are they not understanding that uh, उनकी अपनी डिप्लोमेसी दुनिया भर में खराब हो रही है, just because they are unable to strike a balance, strike a friendship with their neighboring country, India. And because of that, look at how much they're suffering. But why does the government not stop doing this? Then I came to know there are two reasons. It just struck me instantly. There are two reasons. One is the obvious. They want to keep the awam, diverted from their administrative and governmental, failures. They wanted to keep the audience diverted from that. So keep them engrossed in the Kashmir issue. That's one reason. That's the reason of the government officials. But what about the awam itself? जो उनकी आम आवाम है, उनको एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कश्मीर को लेके. उनको लगता है कि मुसलमान होने के नाते कश्मीर बिलोंग्स टू देम, जस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ the majority Muslim population of Kashmir, which I feel is very unfair. How can they have this sense of entitlement? Do they have the same sense of entitlement कि भाई हमारा birth right है Afghanistan, because we are also Muslims just like Afghans, so Afghanistan is part of us, or Iran is part of us? Do they say such things? But why जब कश्मीर को लेके ये
ऐसे क्यों बोलते हैं? Why are they not able to accept that Kashmir belongs to India now and Kashmir is happy with India? So then I thought ki if you want to reach the grassroots level, if you want to reach the simplest of the simple awam of Pakistan, to make them understand that actually the situations of what you are imagining, that हमें कोई जबरदस्ती हिंदुस्तान के साथ पकड़ के रखा है किसी ने, ऐसे नहीं है. The situation is that you are looking bad. आप बुरे लग रहे हो बार बार बाय पुटिंग योर क्लेम ऑन कश्मीर. अपना हक जता के कश्मीर पे आप बुरे लग रहे हो दुनिया भर में. अब ये उन बेचारों को जो सिंपल आवाम है उन तक कैसे ये बात पहुंचे, सिंपल सा एग्जांपल देकर. दिस इज व्हाट आई थॉट, जो उनको समझ आए. क्योंकि देखिए अली साहब, इंक्लूडिंग यू, हमारे जो न्यूज चैनल पे, जो न्यूज मीडिया पे जो पैनलिस्ट आते हैं, इंक्लूडिंग यू, आर वेल रिसर्च्ड, वेल लर्नड पीपल. They come with their great sense of intellect, and their research and their statistics, and they come out and say that this is wrong because of this reason, and their rationality. But jo in can you hear me? Yeah, we can hear you. तो नेटवर्क थोड़ा हल्का सा ग्लिच हुआ है, Yeah, बट वी कैन हियर यू जी. can you hear me, Ali? Yes, स्टैंड 5, yes ma'am. Hello, जी, याना थोड़ा नेटवर्क का बीच में पॉज हुआ था, बट नाउ वी Ali, कैन I हियर think यू. I lost you. नहीं, कैन यू हियर मी याना? Ali Saab, I lost you. Yes. Can you hear me, Yana? Can you hear me? Hello? Hello? Yeah. Okay. सॉरी दोस्तों, थोड़ा नेटवर्क का ग्लिच हो रहा होगा, बट आप बने रहिए. याना हमारे पास अभी एक ही मिनट में दोबारा जुड़ेंगे, मतलब यहीं पे ऑलरेडी हैं. यस याना, यू कैन हियर मी नाउ? Can you? Yeah, I can hear you. Sorry about that. राइट. So I was राइट. saying that आप जैसे लोग जो पैनल्स पे आते हैं, आनंद रंगनाथन जैसे लोग, फॉर एग्जांपल, this so look at the way Anand Ranganathan Saab talks. Yeah, it's so, and then all these people, they come out with their expert views. लेकिन ये views जो है आम आवाम तक उनको समझ नहीं आती है शायद. सो आई थॉट कि सिंपल लैंग्वेज में जो जिस तरह का एग्जाम्पल वो समझ सके ऑन अ सोशल लेवल, मैं वैसा एक एग्जाम्पल बना के इनको दे दूंगी, ताकि ये बात आगे फैले एंड उनके लोगों को बात पता चली कि वो कैसे नजर आ रहे हैं दुनिया भर में, बार बार कश्मीर पे अपना हक जता के और बार बार इंडिया को बुरा दिखाकर वो किस तरह से, क्या उनका इमेज बनता जा रहा है दुनिया में, और कश्मीरियों के बीच और बाकी इंडिया के मुस्लिम्स के बीच उनका इमेज कैसे बन रहा है, उनका अक्स कैसे दिख रहा है, वो उन्हें पता चले. तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया. आई थिंक यू गिव अ वेरी गुड एग्जाम्पल. बल्कि आपने अभी बहुत जबरदस्त बात करी है. आपने बोला कि भाई, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम पॉपुलेशन मुसलमानों की है, मगर वहां पे कश्मीरी पंडित्स भी हैं, डोगरास भी हैं. दे आर ऑल्सो इक्वली as Kashmiri as anyone over there, as Indian, all of us in fact, Yeah. and आपने जो जबरदस्त बात ये करी कि उनको लगता है उनका हक है कश्मीर में, बिकॉज मोस्टली मुस्लिम डोमिनेटेड. क्या उनको ये नहीं लगता कि उनको हक जाना चाहिए ईरान में या अफगानिस्तान में? ये बात बहुत दुरुस्त लगी Absolutely. मेरे को भाई. दिस आंसर, सो आई हैव लर्न टू एनालॉजीज फ्रॉम यू, और इसको भी मैं अपने कभी किसी पैनल पे यूज करूंगा इस तरीके से. आई कीप लर्निंग, आई. So ये बात बहुत जबरदस्त लगी. Now tell me one thing. We all do, Now yeah. one of my very dear friends and my senior who I highly respect and revere from the army, Major Gaurav Arya साहब, Hmm. हम साथ में थे 12 Hmm. नवंबर को उनके कॉन्क्लेव में, चाणक्य फोरम. And जी did you जी जी. at all discuss this? Did you कोई बात हुई गौरव भाई से, गौरव साहब से इसके बारे में? नहीं, in fact, he messaged me after a long time. I used to go on his show called Ghamasano, which used to come on Republic TV. I used to appear on that, but that was like 2 years ago, 3 years ago something. ये 2.5 साल पुरानी बात है. फिर उसके बाद आई थिंक द शो डिसकंटिन्यूड. उनका एक ही सीजन होना था, उन्होंने वो फिनिश किया अच्छे से, एंड इट हैड क्वाइट अ गुड फॉलोइंग. पीपल यूज्ड टू फॉलो इट, पीपल यूज्ड टू एंजॉय द शो. एंड उसके बाद अभी उन्होंने फिर कॉन्क्लेव में मिले, एक दो बार बीच में वो श्रीनगर आए थे, वहां मिले. एंड देन after that conclave, this is the first time he actually messaged me, and he said that, well done, this is amazing. So but I do try. He is one of my mentors in the sense that the way he talks, I try to follow that. I try to, like, use his wordings, his guidelines, and in my own debates. So I like the humor part. See, when it comes to humor, I try to get it from Major Gaurav Arya. I try to copy his style a bit. When I watch him in shows and all, I try to get that. When it comes to knowledge and present, the way to present your knowledge,
I copy Anand Rangrazan sahab. I try to, learn up the statistics that behind every topic before I go on a debate. And when it comes to style of presenting, the techniques, I try to copy you. Hey, you're being nice. Come on. No, no, really, really, I try to. अरे यार, very That sweet. energy, जिससे आप बात करते हो, that energy which you throw on the screen, I try to get that. अरे क्या, it's the other way around यार. I look at you, you are a combination of all. In fact, बहुत कम पैनल्स हैं, बहुत कम स्पीकर्स हैं जिनको मैं मानता हूँ. मैं सबसे टॉप पे I consider, not because of my bias from the army, but genuinely मेरे गौरव आर्या. भाई वो जिस Yes, तरीके से अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, बल्कि रखते उनकी हैं. रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, हाँ, डेटा, व्यू हाँ, पॉइंट, फैक्ट्स, हाँ, डेट्स, एक एक चीज बारीकी से मालूम होती है. आज किसी ने मेरे हाँ. को, आज Knowledge मैं with बात, humor. Knowledge with humor. हाँ, हाँ, आज मैं बात कर रहा था दरअसल ककोरी कांड के ऊपर. सो किसी ने मेरे को मैसेज किया हाँ, कि वो भी यूट्यूब पे है मेरे, तो ने लिखा हाउ डिड यू जी. रिमेंबर द डेट्स. अब मैं क्या बोलूं कि भाई, हम्म, एंड यार आई लुक एट द, भाई दोस्तों, आप सब देखिए, मेरे को बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सारे तो हाईलाइट कर नहीं पाऊंगा, मगर जी. कुछ आ रहे हैं. एक तो है, मधु झा लिखती हैं, हाई हर्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम ऑन ट्विटर, सो फनी, तो शी लाइक्स इट. ओके. ठीक है. Thank you, तो Madhu. फिर एक sayonara डील्स लिखते हैं, एक्स गर्लफ्रेंड एंड हस्बैंड एंड द betrayed lover point was on point, याना जी. ठीक है. तो इस तरीके से कई कमेंट आ रहे हैं, and people are very happy that you are here in competition. So, Yana, and In fact, screen. I have heard a lot of extensions of these stories. We'll talk about that later. You get done with your question first. Yes. Right. So, when I talk about screen presence and presentation and data and knowledge and a balanced viewpoint without taking any sides, being totally Hmm. neutral, I think that's you, Hmm. Yana. That's, so you are only being nice Oh, and thank you. polite to me. And yes, it is you. Thank अच्छा, you. so now, yes, Thank you. आप कुछ कह रही थी, क्योंकि I don't want to, मैं प्रश्न उत्तर सवाल जवाब नहीं कर जाता. It's more of a conversation where we converse. हाँ, आप Okay. बोलिए. Great. नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि इनफैक्ट लोगों को मेरा वो स्टेटमेंट पसंद आ रहा है, दैट एनालॉजी. मगर देयर हैव बीन मेनी इंटरेस्टिंग extensions to that story also. So in fact, one of my friends, she's also Kashmiri. She's a Kashmiri Pandit. Uh, so she posted on her Twitter an extension of the story. तो वाइफ की बहन को अगवा किया गया था एंड वो बेचारी अभी तक किडनैप स्टेज में है, तो उसको भी बचाना अब हस्बैंड ने अपना कर्तव्य समझ लिया है. She's talking about POK. तो वो अब एक्सटेंशंस आ रही है स्टोरी को, and I'm really enjoying it. It's starting to become like a sort of like a Netflix series now. बल्कि नेटफ्लिक्स सीरीज बनी चाहिए इसके ऊपर, बल्कि वाकई, बिकॉज मेनी हम्म, टाइम्स दोस्तों, एक छोटा सा पत्थर हम फेंकते हैं तालाब के अंदर, समुद्र में, वो एक सुनामी ला सकता है. A small हाँ, spark can light a huge forest fire, in fact. So आप देखिए, एक हाँ, स्टेटमेंट से याना, बिकॉज याना अक्सर उनके साथ पैनल में आई हैं, अक्सर uh, I for me, I maintain a distance, like, I from them, because I'm ex-army, so I don't want to really entertain them much. Though I know Major Gaurav Arya, you guys talk a lot with them, so you have been doing that, and suddenly yeah. this thing, that excerpt of 2.5 minutes, got on fire, and puck, and overnight, and Yana was like there, trending on Yeah, Twitter, like, yeah. yeah. No, I'm surprised because मैंने ऐसे ना honestly पटाखे बहुत बोलते हैं ना फायर क्रैकर्स मैंने बहुत उड़ाए हैं पाकिस्तान की तरफ on the panelists. But I guess this one got the most noticed. वैसे मैंने बहुत I have trolled them so much, whether it's Qamar Chima, whether it's Arzu Kazmi. Before she was so pro-Indian, I used to troll her. Whether it's Mona Alam, there's so many of them. Raja Faisal Saab. I really used to troll them, and I used to have fun doing that. All in good media spirit. Another very nice comment for you, but yeah, and very sensible comment. Sanu Yana deals writes, Yanaji, don't you feel Mm. threatened? Two from Pakistan backed terrorists while reporting around Kashmir. ये इनका सवाल है. Yes. See, I do. I literally बोलते हैं ना जान हथेली पे लेके मैं चल पड़ती हूँ. सब अल्लाह के हवाले, खुदा के हवाले. खुदा निगहबान है हम सबका. बस I just मैं चल पड़ती हूँ, and I feel that
when we have to die, we have to die, and I don't think कि डर के पीछे हटना is the way. You know, in fact, अब देखिए बिलावल भुट्टो के statement पे, there are many over here who are scared to comment, despite having security and despite having political power. They don't want to comment because they feel that they'll be on direct target of the militants. कि भाई आपने पाकिस्तान की ऑपोजिशन की, so wait, we will teach you a lesson. लेकिन मुझे लगता है कि बेइज्जती से जीना, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर की अगर कहीं पे उनकी इज्जत उछाली जा रही है, मतलब देश की इज्जत उछाली जा रही है, और बेइज्जत हो के डर के जीना, इससे अच्छा इज्जत से मरना होता है. दिस इज व्हाट आई बिलीव. You are absolutely right. And you know, I really comment, I really salute your spirit. मगर ये बताइए, like as the Serena deal writes, आपको डर नहीं लगता that you know Yes. in Kashmir do people threaten you or do people come up to you saying that you report from there that you know कि someone Yeah. tries to bully you or bulldoze? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? I don't know. On ground, I have not seen that happening, but on social media, yes, I've been threatened a lot on social media, but on ground, I have not seen that happen much. I mean, I have people respecting me wherever I go, and they appreciate that I go to far from places to cover their stories. And I try to make the stories reach the higher management, sorry, the higher administration, so that they get some kind of help, and they appreciate whatever my little bit efforts are. They appreciate that, and it's never like the locals have never sort of made me feel like that we want to kill you. That feeling I've never got. But yes, on social media, a lot of that has happened because you never know. जो आपके सामने होता है, maybe they're putting on an act, and behind my back they're actually plotting to kill me, and they've not been able to say that to me on the face because they probably think that this girl's here to help poor people, or people help them solve their grievances, and that she's here to help grieving people. She's coming in between us. Whenever I leave the house and go between them, they know that I'm here to help them. So then probably at the end of the day, they think, what's the point in, killing her, even if they want to, but they won't do that just on the basis of narrative. I feel so. I'm trying to be optimistic. I'm trying to think that I'm loved by You most are, people. So, which is why, you but are, yes, threats are always there. you are. Madhuja has written Yeah. that इन्होंने पहले लिखा कि Satish Dua Saab and Bani Bakshi ji have also commented, and then she's written, sorry, she meant Hani Bakshi Saab. So Colonel Hani Bakshi, you must be knowing, and Lieutenant Satish Dua also might be knowing. Lieutenant I Satish know. Dua I was, know Satish Dua. हाँ I mean, मगर I don't I know them personally, but I know. हाँ but हाँ मगर उनके कमेंट नजर नहीं आ रहे मेरे को, हालांकि मधु जी ने लिखा है कि उन्होंने कमेंट किए हैं, मगर पता नहीं क्यों नजर नहीं आ रहे हैं कमेंट उनके. बट anyhow, so now, yeah, I have Kashmir is a beautiful place. You know, I have served in JNK for 2 years when I was in the army as a line of control. और आपका फ्रेम थोड़ा टेढ़ा हो गया है या नेटवर्क का इशू होगा मेरे ख्याल से. You can turn it if you wish to, or if hello, चलो मैं भी ऐसे करता हूँ ऐसे. Yeah, now it's fine. I thought now to sync with you and I was doing this. All right. No, So I was actually trying to connect my Bluetooth back. I can't actually hear anything that you're saying. So it okay, kind okay, of all got right, disconnected. all right, all Yeah. right. You can I continue. have I can still hear you. But I don't know if you can hear me. strength 5. I can hear you clearly. Bilkul. I can hear you. Can you hear me, Okay. Anna? I can hear you, but can you hear me? GG. People only see 2 minutes clip that is viral, but not the risk you and your family is taking to put your point across. Thanks to you and your family. Someone's given that, and you said you are loved. You are loved. You are respected. There's no doubt about that. सो एक कमेंट आया आपके लिए. अच्छा अच्छा, इन्होंने मधुजा ने लिखा है कि ऑन ट्विटर, मतलब जन सतीश दुआ या करण हरी बख्शी ने ट्विटर पे कनेक्ट कमेंट करा है, मतलब In सही fact, है. Satish Dua साहब ने I think इंस्टा पे भी रखा है रील जैसा कुछ. राइट राइट. सो आई हैव बीन टू कश्मीर ऑन कपल ऑफ ओकेजन, बल्कि आई सर्व देयर You व्हेन आई वाज इन served द there, आर्मी. no? जी जी, आई सर्व देयर. और उसके अलावा फिर मैंने शूटिंग करी फिल्मों की, बल्कि
हैदर की शूटिंग कश्मीर में हुई थी, बजरंगी भाईजान की Yes. शूटिंग कश्मीर में हुई थी, मोजी फिल्म करी है मैंने, इट्स अ शॉर्ट फिल्म विद माय कजन हिबा शाह, नसीरुद्दीन शाह's डॉटर, एंड तो Okay. एंड बल्कि अवरोध जो वेब सीरीज है ना, वो भी कश्मीर में ही शूटिंग की थी. तो टेल मी यार, Yeah. एज अ कश्मीरी, एज अ लोकल ओवर देयर, सो हाउ डू यू फील? आपको लगता है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं, अरे भैया फोन करते हैं, भाई मैं ना अपनी फैमिली को कश्मीर लेके जा रहा हूँ, वहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे पूछते हैं. हाँ. आई हैव अ लाफ, आई हैव अ लाफ. हमने, यार कैसी बातें कर रहे हो? मेरी नजरों में, माय परसेप्शन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई लिव इन दिल्ली, सो ऐसे है भैया, इट इज सेफर देन दिल्ली, मैं उनको बोलता हूँ. ना तो ना. अच्छा, नहीं, ऐसा मैं उनको बोलता हूँ, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो मैं कहता हूँ भाई यहाँ पे तो Yes. क्राइम रेट, किडनैपिंग, मर्डर, रेप होते रहते हैं यहाँ पे, एंड वहां पे आप न्यूज में पढ़ते हो उग्रवाद, तो आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत खतरा है, ये वो, ऐसा माहौल बिगड़ा हुआ है. तो वहाँ माहौल, वहाँ पे हालात कैसे हैं ऑन ग्राउंड इन कश्मीर? See, on ground. Okay. I'll tell you this: tourists are never at the, they're never on target of the gunmen, of the militants. They're never. First of all, I find it funny that they're referred to as militants over here, because militants basically means people who fight with others who are in a military uniform. है ना? तो चलो ठीक है, as long as they're fighting with military or army, they have their own reasons. It should not happen. It's fine. But then, see, जो दहशतगर्द होता है, उसको दहशतगर्द बोलने का रीजन ये है कि they also target civilians when they throw grenades. Of course, even civilians get hurt. They lose their lives. They get injured. So that is why they are called terrorists. And there is one thing for sure: terrorists never target the tourists. Never. Reason being, क्योंकि tourists रिजक लाते हैं. It's like, जैसे हिंदूज में बोलते हैं कि लक्ष्मी को इंसल्ट नहीं कर सकते. That sort of thing. Tourists रिजक लेकर आते हैं, तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट है. इनफैक्ट उनके लिए तो जाने दी जाती हैं, टू सेव देम फ्रॉम ड्राउनिंग और फॉलिंग ऑफ अ हॉर्स. देयर मेनी कश्मीरी गाइड्स, and I knew one or two personally who were anti-national in their thought, in their mindset, and yet one of them actually died while saving a tourist family. Because their raft was going to turn in the Leader River, and he actually gave up his life trying to save them, and they were Indians. So see, Oh, that is the thing, that when it comes to tourists, they will never, they'll try to protect them, in fact, at all costs. If they feel that tourists are stranded, they'll open up their homes for them. But the problem that really happens is, what tourists have to be careful about is that, yes, I would see, I'm a Kashmir, but I will not be selfish and say कि नहीं नहीं कुछ नहीं आप लोग आ जाओ. Definitely when things become bad, like jab Burhan Wani ka wo incident hua tha, where he was, killed, and then there was a lot of unrest over here. I warned a lot of friends, don't travel to Kashmir. Don't. Because see, yes, so when times are like that, of course it's not a good idea. Then beach mein abhi May mein jo ek series of Kashmiri Pandit killings ho rahi thi, you know उसका बैकलैश भी हुआ, बिकॉज उससे पहले तक ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ टूरिस्ट का फुटफॉल हुआ कश्मीर में. एंड देन सडनली दैट वाज अ डल पीरियड, फ्रॉम मे टू, यू कुड से, अगस्त सितंबर तक. इट वाज अ डल पीरियड, अ लिटिल बिट. रीजन बीइंग कि वो पंडित्स की किलिंग शुरू हो गई वापस से. तो यस, एंड आई वुड एडवाइज दैट जब भी आपको लगता है कि यहाँ पे किसी तरह का अनरेस्ट है, please don't travel. And but otherwise, in normal scenario, tourists are never the targets. Like I said, the targets are usually, unfortunately, either Kashmiri Pandits or non-locals who come here to work, or Muslims like myself, who they think जो मारने वाले हैं उनको लगता है I'm a मुनाफिक or I'm a मुखबिर. And if, in the service of my nation, how can they call me a munafik? I'm in the service right. of my nation. I'm, if I am on India's side, I have never been on their side, then I don't know वो किस मुंह से मुझे बोलते कि ये मुखबिर है या मुनाफिक है. I'm always on India's side, and that's, I'm being clear about it. So it's people like me
who stand for India. There's a huge section of Kashmiri Muslims who stand for India, and they're all on target. So they are in the radar, and like I said, non-locals and Kashmiri Pandits, not the tourists for sure. Very true, very well said, Yana, very very well said. One more thing I want to ask you, आपका जब वीडियो इतना वायरल हुआ, लोग जब शेयर कर रहे थे, खासतौर से व्हाट्सएप पे, तो मैं देखा कि the tagline along with that, see what Pakistani journalists, Pakistani reporters are talking about India. तो भाई मैं लगा भाई क्यों भाई, क्योंकि नाम याना मीर है और आपका नाम आरजू काजमी है और यूसुफ जाई साहब है, तो मतलब पाकिस्तान तीनों पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बन गए, ये क्या बात हुई? तो मैं लिखा नहीं भाई, आई नो याना मीर पर्सनली इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैं बहुत लोगों से इसमें झड़प भी हुई, झड़प मतलब इट वाज गुड थिंग, बट इन अ सेंस कि इन अ पॉजिटिव वे, हेलो शीतल पाकिस्तान, तो जब ऐसी गलत फहमी कभी किसी को पैदा हो जाती है, हाउ डू यू फील? आई नो फॉर अ फैक्ट द वे जितना आप हमारी मातृभूमि से, हिंदुस्तान से आप प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं, भाई काबिल तारीफ है। मैं इट्स रियली, यू आर ट्रू पेट्रियट। सो हाउ डू यू फील व्हेन ऐसी गलतफहमी हो जाती है लोगों को? I'll tell you how I feel. आज हम उस जमाने में जी रहे हैं जब किसी को गाली देने से ज्यादा बुरा होता है किसी पे छींकना या खांसना, because we have just come out of the COVID phase, right? That is worse than giving somebody than abusing somebody in today's time. If you sneeze at someone, he'll take more offense than if you abuse him. But if there is one section of us who are so hyper nationalist, if you call us Pakistani, it is worse than sneezing on me, it is worse than abusing me. So please, Very well and what I said, noticed very is well said. that My God, यार, what I noticed सच is में। that it's not the Pakistanis fault. It is a fault of Indian Twitterati. A lot of those enthusiastic people who actually forwarded that video, they were, despite being Indians, they were under the galat fehmi that she's a Pakistani. या शायद उन्होंने गलती से टाइपिंग मिस्टेक होगी या पता नहीं क्या था. They said, look at these Pakistani journalists, and then वहां से वो जब retweet होता गया, so then Yeah. everybody perceived me as a Pakistani journalist. So I think these things happen, and it's ठीक है. I mean, if they want to take the credit and call me a Pakistani, for me it's an insult. It's an outright insult, I feel. But then ठीक है, I understand that these things happen. बहुत सही फरमाया, बहुत आपने ना मेरे मुंह की बात छीन ली वाकई में। सो यू हैव स्पोकन माय में जज्बात जो है ना, यू स्पोकन दैट, जब 14 फरवरी 2019 को या जब फिल्म आपको भी आया तो बोलते हैं ना कि you are not Indian, you are Afghan. How do you या feel about that? यू सेड इट, मेरे को एक बंदा Yeah. बोलता है, मुझे भाई 15 अगस्त को पिछले साल मैं एक टीवी पैनल पे था, तो मेजर मोहम्मद अली शाह, ठीक है, तो कहते हैं, तो अफगान आर्मी भाग गई थी प्रेसिडेंशियल पैलेस में छोड़ के, तो हियर वी हैव अ मेजर फ्रॉम द अफगान आर्मी। मैंने कहा हेलो, हेलो बॉस, हेलो। क्या बात कर रहे हो यार, मेजर मोहम्मद अली, तो क्या मेरी No, सिस्टर but सारा it's शाह not अली। so insulting to be called Afghan as it is to be called Pakistani. या आई Because, नो, आई नो। they have actually lost their respect in the eyes of the world because of the kind of decisions that their government takes, or their army takes rather, and the kind of language they use on international platforms, Ali. That is so unethical and uncouth, and the kind of videos that come from there, their higher authorities involved in such kind of scams, and the way they abuse people at airports. And you must have seen those videos surfacing, and it's just like they seem like a community that has no manners, and that is why I take it as an insult. The way they talk, the way they use the word rape, every time they say things which really offend me as a Kashmiri, as a Muslim, it really offends me. Kashmiri women are getting raped every day. What? Are you even I thinking? How will a swear, Kashmiri woman feel when she hears that? I swear, what एक rubbish. हद होती है प्रोपेगेंडा करने की यार. एक हद होती है. And he's a butcher of Gujaratis. Is that something to say on an international platform? Is that how you talk? What is the use of him having that international accent? By the way, मेरा एक और वीडियो वायरल गया था उससे एक दिन पहले. ये हस्बैंड वाइफ वाले वीडियो से एक दिन पहले एक और मेरा वायरल गया था, in which I had actually addressed
the United Nations Sadar, and I told him that please inhibit the kind of guests who come to speak on your platform. Please do not permit them to, objectify another country's prime minister like this. Have some ethical rules about what kind of language is used over there, because it's a very revered platform, the United Nations. You can't have people coming in and speaking like this. This is the kind of language that would even be censored in a Balaji serial. You know what I'm saying? So True, very true. they have to get a grip on how they talk, how they vilify, and with such obscene language, vulgarity उनमें भरी हुई है जी. एंड यार मैं वाकई में आपके साथ गुफ्तगू में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है एंड यू आर रियली आई मीन आप जितना खूबसूरत लगती हैं उतना ही खूबसूरत आप बात भी करती हैं वाकई में एंड Thank you इट so इज much. Thank you. so amazing to be in conversation with you और आपने थैंक गॉड आपने बहुत सारे फंडे क्लियर कर दी यू थिंक यू पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन पर्सपेक्टिव एंड यू हैव स्पोकन ऑन बिहाफ ऑफ एवरी मुस्लिम हु इज अ पेट्रियट हु लव्स द मदरलैंड भाई मैं बोलूंगा तो भाई फौजी आदमी है बोलेंगे बट हियर वी हैव अ कश्मीरी वुमन अ कश्मीरी लेडी very well known a public figure speaking and telling you all let's listen we guys are really I mean it is Thank you. अब Thank मैं you. क्या बोलूं I don't have words आज के लिए and इतनी तारीफ काफी है अली साहब, मैं सो नहीं पाऊंगी रात को. आपने इतनी तारीफ खिला दी मुझे, मुझे इंडिजेशन हो जाएगी. come on and मैंने एक ओपन लेटर लिखा था टू जैश ए मोहम्मद द टेररिस्ट आउटफिट 14 फरवरी को जब पुलवामा अटैक्स हुए थे उस रात वो बड़ा वायरल हुआ था वो इसके बड़े मिलियन शेयर हुए थे एंड इनफैक्ट वो एक शुरुआत थी उसके बाद ही आई got noticed to come as a TV panelist and I started speaking on television and such things. Oh, you And never told me this. When we met yeah, at the Z studio like 3 years ago, do you remember? You of never know, course I mentioned to me remember. that you had I written a remember letter very like that. clearly. I remember very clearly. I remember very very clearly. और तुम्हारा पूरा ओल्ड नंबर ना याना मीरचंद धानी जो मैं सेव कर रखा था जो बॉम्बे का when you had left बॉम्बे वो था मेरे पास बोले यार but luckily after that then we but मैं भेजता हूँ तुमको वो भेजता हूँ लेटर and it was wonderful Google पे भी है it was wonderful being in conversation with you याना and शुक्रिया बहुत बहुत Same हमारे लिए here. वक्त निकालने के लिए really you added glamour to the show without meaning to be glamorous why because कोई बहुत कम लोग होते हैं जो खूबसूरत भी होते हैं दिखने में और बातें भी करते हैं खूबसूरत और अकल they are well read they're well informed and they're intelligent as well so you are a combination of what do I say अब मैं आप तारीफ Thank you. करूंगा तुम बोलोगी इंडाइजेशन हो जाएगा शुक्रिया इंडाइजेशन हो थैंक यू जाएगी और क्या. मुझे हाजमोला लेना होगा. चलो, थैंक यू सो मच ठीक है फॉर यार हैविंग मी बाय ऑन योर शो. बाय गुड टेक केयर नाइट अली बाय साहब. बाय बाय बाय. यार